एंड अगर आप इमाद भाई को देखें तो वो लास्ट ईयर PSL के बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए थे। नसीम शाह भी आए हैं। हमें काफ़ी खुशी भी है कि हमारे पास 2 ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो फ्यूचर में हमें मैचेस जिता सकते हैं। आपने मुख्तलिफ लीग्स खेली है दुनिया भर में, T20 की टेनिस खेला है, तो PSL को कहाँ रेट करते हैं? और आप और इस दफ़ा जो कॉम्बिनेशन इस्लामाबाद का बना है उसमें इमाद वसीम भी आए हैं, नसीम शाह भी आए हैं, तो कैसा देख रहे हैं आपका नया सीजन होगा? आई थिंक काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। और जो हमारी 2 ट्रेड्स हुई हैं माशाल्लाह से, आई थिंक दोनों बहुत ही टॉप परफॉर्मर है पाकिस्तान के लिए भी। एंड अगर आप इमाद भाई को देखें तो वो लास्ट ईयर PSL के बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए थे। तो आई थिंक हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है कि नसीम शाह भी आए हैं। फ़ोन ज़रा प्लीज़ साइलेंट करें। हमारे पास अच्छे ऑप्शन आए और आपको पता है कि दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो किसी भी टाइम मैच जिता सकते हैं। तो हमें काफ़ी खुशी भी है कि हमारे पास 2 ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो फ्यूचर में हमें मैचेस जिता सकते हैं। आजम इस्लामाबाद यूनाइटेड में रोटी गैंग का एक ग्रुप सर अली जो है वो ट्रेड हुआ कराची में, तो आप उसको मिस करेंगे इंटरव्यूइंग किए सर PSL देखिए यही है। PSL में आपको पता है डिफरेंट प्लेयर्स आते हैं। मैं पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स से खेलता था, तो वहाँ तो रोटी ग्रुप था नहीं, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही था। लेकिन इन दी एंड कोशिश करूँगा कि हसन भाई की जगह ले लूँ रोटी ग्रुप में, लेकिन वो लेकिन उसके लिए थोड़ी मुझे अपनी जगह पक्की करनी पड़ेगी पहले। लास्ट क्वेश्चन जी, सोहेल भाई। सोहेल मैं जो टीवी से हूँ, आजम कहा जाता है कि बड़े प्लेयर्स नहीं आए इस दफा जो ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर्ड हुए, उसमें से पाकिस्तानी जो जाहिर है वो बड़े ब्रांड के साथ में, तो कितना समझो कि पाकिस्तान के जो स्टार हैं उनके साथ जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं C20 का उनका हिस्सा होना बहुत जरूरी होता है PSL की कामयाबी? सर टू बी ऑनेस्ट आई थिंक अगर आप देखें तो पास्ट T20 टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया है दुनिया में। तो मैं ये हमेशा समझता हूँ कि जैसे 2021 का वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेले थे, हालांकि हम 5 मैचेस जीते थे ग्रुप के हमारे, और हमारे काफ़ी अच्छी टीमों से मुकाबले हुए थे। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट T20 में आई थिंक मैं समझता कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है दुनिया में। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के जो T20 प्लेयर्स हैं उनसे हमारे लड़कों को ज़्यादा फ़ायदा होगा बनस्बत बाहर के लड़कों से। आजम एक इशू बन गया था, आपने बैट पर लगाया, फलस्तीन का सपोर्ट किया, अवाम ने बहुत सपोर्ट किया आपको, तो उसके बाद वो जमाना वापस हुआ। कितना आप समझते हैं कि इसका आपके उस इक़दाम से रिस्पॉन्स मिला आपको? सर आई थिंक मैं इस सवाल का जवाब देना यहाँ दुरुस्ती से आजम, you don't have to answer that question. जिस समय मैंने कहा था पॉलिटिकल थिंग, तो मैं नहीं चाहता कि मैं करूँ, क्योंकि PCB के प्रोटोकॉल है, तो आई हैव टू फॉलो। I think that concludes our ceremony. एक मैं क्वेश्चन अवैस बिन नसीम से ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि टेट्रा पैक का जो इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट को लेके, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को एजुकेट कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। टेट्रा पैक का जो हमारा इनिशिएटिव है, बिकॉज अगर आप देखें कि अनलाइक एनी अदर पैकेजिंग इट इज़ अबाउट 70% रिसाइकल, और उसको वी आर ट्राइंग टू टेक इट अबाउट 80-85%, क्योंकि उसमें गत्ता है और पॉलीमर, और वो जो इन्वायरमेंट के लिए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी में पाकिस्तान विद इन टेट्रा पैक, और यूरोप में अगर आप देख लो तो पाकिस्तान इज़ लीडिंग दैट, बिकॉज वी आर वर्किंग इन कलेक्शन और उसको रिसाइकिल करके उसका आइटम बना रहे हैं। इस तरह फर्नीचर वगैरह बच्चों के पार्क्स का, ये काफ़ी आइटम ऐसी बन रही हैं, और इट्स बीइंग ग्लोबल सक्सेस जिसको हम बाकी दुनिया में, आई एम गोइंग टू एक्चुअली नेक्स्ट मंथ मैंने यूरोप जाना, वहाँ पे स्पेन में और बाकी मुल्कों में वी आर गोइंग टू पोर्ट्रे कि हमने रिसाइकिल करके उसको क्या बनाया। तो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल इनिशिएटिव फ्रॉम टेट्रा पैक साइड। Thank you so much, and thank you everybody for joining us. That concludes our ceremony. Of course, आपको पता है पीछे हाई टी आपके लिए तैयार है। So thank you very much, Hassan, and very delighted to be here, and thanks to Awais, Adnan, Azam to be here as well. About Islamabad United, just want to let you know, something that we really take pride in is the fact that, we believe in 4 E's, which is the ethos of Islamabad United. So through 2 of the E's, without making it too complicated, are, and I'll mix between English and Urdu so that it becomes easy for all of us.
is basically excellence, which is basically Islamabad United every year tries to do something new, cutting edge of the technology. We were the first franchise which actually introduced Web3 in cricket. That was the first time it was ever done in the in the whole globe. We were the first franchise which actually merged arts with cricket. That was also never done before. Then we have also done things, for instance, we were also, another initiative that we took was called United We Tech, where we actually sponsored and supported tech startups which were from all fields but also related to sports. So every year we try and do something new. This year as well, because we believe in excellence, we will be working on a gaming app and we'll be announcing it. And that gaming app is going to integrate with our Web3 stadium in cricket. So that's going to be a new thing we're going to be doing this year. So every year we try and do something new. The other E that we want to talk about is environment. So environment, we have taken again many initiatives for the environment as well without taking too much time. So when it comes to these two E's, obviously there is not a better name than Tetra Pak, which has standard new global standards in packaging and processing, health and safety, and they are at the cutting edge of technology. So it's a very natural alignment between Tetra Pak and Islamabad United, and I think this is the reason why, since 2019, it's been about 6 years we have been together, and I believe and I hope, and I'm sure Awais is going to join me in saying that, we hope that this partnership is going to grow from strength to strength in future. So thank you very much. I'll stop here. Over to you, Awais, please. Thank you, Hassan. Assalamu alaikum ji. I think it's always, as usual, a pleasure to be partnering with Islamabad United. And as Hassan said, I think this is the reason why the two organizations, the theme, the spirit, and the mission and the objective at large is actually the beneficial for the Pakistan nation. And I think what the PSL and especially in all these franchises, especially Islamabad United, has been able to motivate the youth for this country, and which is required. And what we stand for, I think, this motto for this United We Win, I think it's so apt for the whole nation that we have to be united in order to win any field, anything. Let it be education, let it be health, let it be sports, let it be politics, let it be our country. We have to stand united against the challenges which we are facing as a country right now. And I hope that seriously we will be able to come through out of this, and all the tools which we require for our youth and for our nation to provide recreation, value recreation. That is what is the objective of this. And coming to what Ahsan just mentioned about the partnership and the technology which they are trying to introduce, I think this is, the future is going to be in the technology, how you use it for the betterment of the nation. I think Islamabad United is doing a great job, and we, on the other hand, Tetra Pak has a global commitment of making food safe and available everywhere. So 30% of the food actually goes wasted. This is like anywhere in the world. It is not sustainable for the world where we are heading towards. So we have to find partnerships to raise the awareness, especially on the environment and the sustainability side as well. Tetra Pak Pakistan is actually leading a drive on the environmental end as well, in order to recollect waste and recycle the cartons which we are using. So I think we have a lot of potential in these platforms in order to join hand and to see that we united, we win. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, gentlemen. At the cutting edge of innovation and setting standards, I'd like to now request for you to proceed with the signing of the MOUs and kindly exchange the files as well.